बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है and actually we are going to start a new chapter. It's a chapter number 7 about the oscillations. So basically this is the third type of the motion. हमने चैप्टर 3 पढ़ा, वहां हमने बात की लीनियर मोशन की, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन। वहां हमने उस मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस किया। देन हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5। द चैप्टर नंबर 5 वाज अबाउट द सर्कुलर मोशन एंड द रोटेटरी मोशन। कि जब कोई आपका बॉडी सर्कल में या फिर अपनी ही एक्सिस गिर मूव करता है या फिर रोटेट करता है, तो दैट इज व्हाट नोन एज द रोटेटरी मोशन। तो चैप्टर 5 के अंदर हमने उसको डिटेल से डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको। एंड नाउ हियर वी हैव द चैप्टर नंबर 7 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑसिलेटरी मोशन दैट इज आल्सो नोन एज द वाइब्रेटरी मोशन। So let's look here. We have some common phenomena right in this picture. You can see okay, here we have the picture of simple pendulum, and the simple pendulum executes the oscillations. इसकी जो motion होती है वो एक oscillatory motion होती है. Look here, it's a vertical mass spring system. Here we have a mass that is attached with a spring hanging vertically. So when it is set into vibration, it also vibrates or the oscillates about its mean position, having the oscillations. Okay, so here we have the some of the examples about the oscillations. So let's start. So first of all, here we have some terminology of the oscillatory motion. That's a very important one. अगर आपने oscillations को समझना है तो जो terms अभी हम यहाँ पे discuss करने जा रहे हैं, you will have the clear understanding about these terms. So let's start. First of all, here we have the definition of the oscillation. So what is an oscillation? So it is known as a type of the harmonic motion, typically periodic. A type of harmonic motion that is typically periodic. ये हमारे पास हार्मोनिक मोशन होती है जो अभी हम आगे चल के देखते भी हैं, और पीरियोडिक होती है, मतलब इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब भी वर्ड पीरियोडिक आ जाएगा तो इट मींस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी दैट रिपीटेड इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द पीरियोडिक। इन वन और मोर डायमेंशंस इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अभी आपकी ऑसिलेशन वन डायमेंशन में भी हो सकती है, मतलब ओनली अलोंग वन एक्सिस, और मोर देन वन डायमेंशन, मतलब दो या दो से ज्यादा एक्सिस के अलोंग भी आपके पास ये मोशन हो सकती है। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द ऑसिलेशन। एग्जांपल मैं भी आपको दे चुका हूँ, हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग हो गया, वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम हो गया, आपके पास सिंपल पेंडुलम होगा, कंपाउंड पेंडुलम होगा। तो दीज ऑल हैव द व्हाट द ऑसिलेटरी मोशंस। So next we have the vibratory motion. So what is a vibratory motion? It is known as the to and fro motion of a body about a mean point is called the oscillatory or vibration. Oscillation or vibration. So यहाँ पे आप इसको छोटा सा काम कीजिए कि ये ऑफ नहीं आएगा इधर, ये इस ऑफ, यहाँ से आप इसको आकार की यहाँ पे आर डाल दीजिए, ठीक है। So here we have the R. Okay, so that the to and fro motion, to and fro basically phrase है, ठीक है। रिमेंबर, इट्स टू एंड फ्रो फ्रेज है, इट मींस किसी चीज के आगे पीछे। टू एंड फ्रो मोशन, किसी चीज के आगे पीछे मोशन। अब आगे पीछे मोशन किसके गिर्द है? अबाउट अ मेन पॉइंट, जो सेंट्रल पॉइंट होगा, जो मेन पॉइंट होगा, उसके गिर्द जब एक बॉडी मूव करेगा तो उसकी ये मोशन क्या कहलाएगी? ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। So next we have the vibration. What is a vibration? Complete round trip of body about the mean position is called vibration. एक बॉडी जब एक चक्कर मुकम्मल करेगा मीन पोजीशन के गिर्द, that will be known as a vibration. उसे हम वाइब्रेशन का नाम देंगे। So look here कि when we have a simple pendulum, okay, so जब आपका सिंपल pendulum just like that you move करेगा, so here we have the extreme position and it goes from one extreme to the other just like this one, and then it comes back to the same extreme position, then a one
vibration will be completed, or there will be a one complete round trip. Okay. So ये हमारे पास बात आ जाएगी कि वाइब्रेशन क्या है. Then next we have the time period. The time required by a body to complete one vibration or oscillation is called time period. एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम आपको रिक्वायर होगा, दैट विल बी नोन एज अ टाइम पीरियड. वो आपके पास एक सेकंड भी हो सकता है, लेस देन एक सेकंड या एक मिनट भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑसिलेशन कि किस किस्म की ऑसिलेशन जो वो हो रही है. देन वी हैव द फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. अब ये देखिए, ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर है वो टाइम पीरियड है. एंड लुक हियर, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड. अब एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं, कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट होती हैं, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑसिलेटर. तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेटेड है बाय द रिलेशन f is equals to 1 over t. That is, time period is the reciprocal of frequency. एंड रिमेंबर, यहाँ पे एक मजे की बात है कि आमतौर पे एक एमसीक्यू पूछा जाता है, उसके लिए आप स्कूल में इसको याद रखना है. दैट इज, आपसे कहा जाता है द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, कि बताइए जो फ्रीक्वेंसी है वो और जो टाइम पीरियड, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है या क्या आना चाहिए. तो लुक है, यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा कि जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे f into t, that will be is equals to 1. So answer will be the 1. तो ये important एक MCQ है, आपने इसको याद रखना है. ठीक है. That is the product of frequency and a time period is equals to 1. The unit of frequency is hertz. इसको हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं आफ्टर द जर्मन फिजिक्स फ्रैंकलिन हर्ट्ज. तो हर्ट्ज इज इक्वल्स टू पर सेकेंड. हर्ट्ज है, यहाँ पे देखिए ना, F इज इक्वल्स टू 1 over t. तो t का आपके पास यूनिट क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा. तो ये t सेकेंड ऊपर जाएगा, इट विल बिकम अ -1. सो s -1, और दैट इज इक्वल्स टू cs -1. हियर वी हैव द c स्टैंड फॉर साइकिल्स. ठीक है, चक्कर, उसने कितने चक्कर मुकम्मल की, कितनी ऑसिलेशन मुकम्मल की, कितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल की. सो सी स्टैंड फॉर द साइकिल्स हियर, एंड दैट विल इज इक्वल टू द cps, साइकिल्स पर सेकंड. cps, cycles per second. So unit of frequency is simply hertz, that is equal to the s minus 1, and that is equal to cps, stand for cycles per second. Okay, so here we have the some sort of the टर्मिनोलॉजी, एंड नेक्स्ट ये हमारे पास आगे फर्दर भी आती है. आइए इसको देखते हैं हम. ओके, तो here we have a भाई साहब that is swinging a, that is swinging. तो इसके रिलेटेड हम थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे. He is basically executing the simple harmonic motion or the vibratory motion. So look here, a periodic motion which is repeated in equal interval of time is called a periodic motion. So such a motion that repeats itself in equal intervals of time. For example, look here, if it is executing a simple harmonic motion, and it's a we can say the periodic motion, then he is repeating its motion after equal intervals of time. Say it's a 2 second. After 2 seconds, it repeats its motion. So such type of motion is known as the periodic motion. And then we have the displacement, that's denoted by the x. The distance of the oscillating body from mean position to any instant is called displacement. So look here. Here we are going to draw a line. Oh, sorry. So just like this one. And this is a, say, its mean position.
and here we have the point A, and here we have the point B. That's the point B. Now look here, it's the mean position O, point A and point B are the extreme position. So at any instant, the distance of the vibrating body from the mean position, like say it has a distance like this one, that is the x, okay, or at any other instant it is just like this one at this position, it's a distance x. So these distances will be known as the displacement of the executing body. Now look at the definition. Definition हमारे पास क्या आ रही है? That the distance of oscillating body from mean position at any instant. Like body आपका इधर भी हो सकता है, body आपका इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं भी हो सकता है. तो mean position से उसका जो distance होगा, that will be called its displacement. And next we have the amplitude. The maximum displacement of body from mean position is called amplitude. So if we go back to the previous slide, now look here. Here, mean position, this is the mean position and this is the extreme position. So the distance between the mean and extreme position is called amplitude. The distance from mean to extreme position. So look here, this is the mean position, and here we draw a line just like this one. So this is what the x naught. This is what the x naught, and this is denoted. This is called the amplitude or the maximum displacement. So body अब इससे पीछे नहीं जा सकते. तो जो body की extreme position होगी और mean position, उनके दरमियान जो distance होगा, it is known as the amplitude or maximum displacement. So it is denoted by the x naught. So remember, x is the instantaneous displacement and x naught is the maximum displacement. ये आपने याद रखना है, आगे हमें ये काम भी आएगा. So I hope so now you will be able to distinguish between the displacement and the amplitude. So here we go, next slide, and let's clear out the drawing here. Amplitude. What is the amplitude? So maximum displacement of a body from mean position is called the amplitude, and remember it is denoted by the x naught. So previously previous slide पे मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ. So definitely you will have the idea about the amplitude. And next we have the angular frequency. It's the omega. It is represented by the omega. Basically, the angular frequency is a property of the rotatory motion or the circular motion. But here, next step, we are going to combine the simple harmonic motion with the circular motion. So definitely, हमें इसके काम आएगा. That's why we are writing here as omega is equal to the 2 pi f, where omega is the angular frequency. That is how many cycles completed in 1 second. जब कोई बॉडी साइकिल के अंदर मूव कर रहा हो तो एक सेकंड में वो कितने साइकिल्स या कितने चक्कर कंप्लीट करेगा, दैट इज नोन एज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा इज इक्वल टू द 2 pi f. So here we are going to start the next topics about the simple harmonic motion, S.H.M, commonly known as, and is defined as the motion in which acceleration of body is always directly proportional to the displacement of the body from mean position and is always directed towards the mean position is called simple harmonic motion. So here we have the two characteristics of a body of body executing simple harmonic motion. याद रखनी है दो कौन सी हैं. पहला हमने कहा कि that acceleration is directly proportional to the displacement. तो जितना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना उसके अंदर एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा. एंड द सेकंड वन इज द दैट एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. मीन उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर होगी, मीन पोजीशन की ही तरफ होगी. So here we have the two characteristics are the properties that when we combine
we have the definition of a simple harmonic motion. So here we are going to take the example of horizontal mass spring system to understand the simple harmonic motion. Look here. So here we have a horizontal mass spring system. This is a spring lying horizontally, and here we have a body of mass m that is attached with this spring. So here we have the what, the body that is attached with the spring. Okay. Then नेक्स्ट हमारे पास क्या सिचुएशन आती है जी, we are going to represent its mass by the m. Okay, and this is what it's the mean position. Let's see, O and A and B are the extreme positions. Okay, here we have the two extreme positions, and basically it's the A that is the mean position. The A and B the extreme positions, and O is the mean position. So let's start. From Hooke's law, F is equals to minus kx. From Hooke's law, F is equals to minus kx, where F is the applied force, k is the spring constant, and x is the instantaneous displacement. We have the instantaneous displacement here. So अब next हमारे पास क्या सीन आने जा रहा है जी, at point A, applied force is equals to the restoring force. So you can take this point, okay, or point anywhere between the O and B. The force we have applied to displace the body from the mean position. The force we have applied to displace the body from the mean position will be is equal to the ma, and the restoring force from the Hooke's law, that will be is equal to the minus kx, where k is the spring constant. Basically, here we have applied Newton's third law of motion. K F applied is the applied force, and minus F is the reaction force. यहाँ पे हम इसे अब किसका नाम दे रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दे रहे हैं. तो अप्लाइड फोर्स विल बी इज इक्वल टू द restoring force. Applied force is equal to ma, and the restoring force from the Hooke's law is equal to minus kx. Then a is equal to minus x k over m. So हमने यहाँ पे क्या किया, previous relation से a को एक साइड पे कर दिया और बाकी हमने इसको as it is लिख लिया. Now look here, k the spring constant, जो कि किसी भी spring के लिए क्या रहेगा, constant रहेगा, and m mass attached with the spring, that will also will be the constant. तो ये फैक्टर k over m फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, constant. जिसको हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि constant and into minus x, or a is directly proportional to the minus x. A is directly proportional to the minus x. Now look here, constant को निकालेंगे तो ये आपके पास इक्वालिटी जब वो प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी. So this is what the definition of the simple harmonic motion. Look here, कैसे, the acceleration is directly proportional to the displacement. Acceleration और displacement जैसे कि directly proportional होंगे. बॉडी का जितना displacement ज्यादा होगा उतना ही उसके अंदर acceleration भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा. And the second one is acceleration is always directed towards the mean position. In other words, we can say that acceleration and displacement are in opposite direction. So the negative sign here shows that A and X, acceleration and displacement, are in opposite direction. So next we have so this is what the mathematical form of the simple harmonic motion, that is A is directly proportional to the minus X. Next we are going to find the time period. So time period T is equals to the 2 pi over omega. The time period is equals to the 2 pi over omega. This is a relation for the time period. Remember, ये आगे में काम भी आएगा.
and here we have a is equals to minus x omega square. ये बेसिकली हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 5 के अंदर सर्कुलर मोशन में, दैट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग द वाइब्रेटिव मोशन और द रोटेटिव मोशन, so its acceleration is equal to this one. अब हम नेक्स्ट क्या कहने जा रहे हैं? So here we have the equation a is equal to the, look here, here we have the equation a is equal to minus k over m x. तो ये हमारे पास आ जाएगा a is equal to minus k over m x, and also the a is equal to the minus x omega square. Here we have the minus x omega square. तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जरा कुछ कैंसिलेशन होंगी, मतलब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एंड ओमेगा स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू द के ओवर एम, आर ओमेगा इज इक्वल टू द के ओवर एम स्क्वायर. यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर या दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओमेगा विल बी इज इक्वल टू द के ओवर एम स्क्वायर रूट. नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा here and we will have the time period for the horizontal mass spring system. So look here, T is equal to the 2 pi square root m over k, where m is the mass of the body attached with the spring and k is the spring constant. So this is what all about the horizontal mass spring system and its time period. And now if you are asked to find the frequency, तो simply आप क्या कर सकते हैं इसमें, सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन अभी आपने पढ़ा कि f इज इक्वल टू दी 1 ओवर t, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड. जब आप यहाँ पे रिलेशन पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी फिर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, f इज इक्वल टू टाइम पीरियड की वैल्यू आप पुट करेंगे, f विल बी इज इक्वल टू दी 1 ओवर 2 पाई 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट k over m, square root k over m. So this will be the formula for the frequency of the mass spring system executing simple harmonic motion horizontally. Okay, so here we have the topic we have just completed. Next topic will be started soon, inshallah.